Hello everyone. Today we are going to start our exercise number 4.3, that is solution of quadratic equation by method of completing the squares. Method of completing the squares. Now this is a method where we have to try to make a whole square from the given quadratic equation. आपके पास quadratic equation given होगी ax square plus bx plus c equals to 0. We have to try to convert this form to something like x plus b whole square minus something plus or minus something equals to 0. Clear? We have to convert this expression to this whole square form. Now how we have to do this? Step number 1. स्टेप नंबर 1 में क्या करना है हमको? एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट वी हैव टू मेक इट 1. कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर इज a, so we have to divide the whole equation by a. What we will get? X square plus b by ax plus c by a equals to 0. Step number 2, we have to consider the coefficient of x now. x का कोफिशिएंट पकड़ा, उसका हाफ किया, that means b by 2a. then you have to square that. तो ये हमारे पास जो भी आएगा उस स्टेप नंबर 3 विल बी b स्क्वेयर बाय 4a. स्टेप नंबर 3 क्या होगा कि हम b 4a स्क्वेयर, we have to add and subtract this number. We have to add and subtract this number from our equation star. Then it will be x square plus b by ax plus b square by 4a plus c by a minus b square by 4a. Add वाली term we will consider this bracket 4a square, and this will be your the second part, second constant value part, equals to 0. This bracket term will definitely give you a complete square always. Now further कैसे solve करना है? Let's move with the help of an example. Example number 1, x square plus 4x minus 5 equals to 0. Now clearly here the coefficient a is equal to 1, so we need not to divide our equation by a. Now this part 2, we have to add and subtract a particular value. Add और subtract कौन सी value करेंगे हम? We have to consider this b. What is b? b is 4. x का जो भी कोफिशिएंट होगा इस केस में वो ही कंसीडर करना है. यहाँ पर a की वैल्यू 1 हो गई तो हमारे पास x का कोफिशिएंट क्या रहेगा? एज इट इज़ 4. 4 का हमने किया हाफ. वट वी गेट 2. नाउ वी हैव टू डू 2 का स्क्वेयर, दैट इज अगेन 4. दैट मीन्स वी हैव टू एड एंड सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम द इक्वेशन. एक्स स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 5 plus 4 minus 4. Clear? So that this bracket can give you a complete square equals to 0. Now how this is a complete square? See, this is your, what is the formula of a plus b whole square? What is the formula of a plus b whole square? This is a square plus b square plus 2ab. Clear? So this is your x square plus 2 into x into 2 plus 4 is nothing but 2 square minus 9 equals to 0. Clear? So this is your a square plus 2ab plus b square.
So this will give you a plus b whole square. So this is nothing but x plus 2 whole square minus 9 equals to 0. Is it clear? Now let me erase this one. Now this is your complete square form. Now you have to solve this. This will be x plus 2 whole square minus 3 whole square equals to 0. Clear? 9, you can write 9 as 3 square. So this is now again sum a square minus b square equals to 0 form. Now you have to use the formula a square minus b square is equal to a minus b into a plus b equals to 0. Clear? So we have to use this formula here. So this will be x plus 2 minus 3 x plus 2 plus 3 equals to 0. Now this is x minus 1 into x plus 5 equals to 0. So x minus 1 equals to 0 and x plus 5 equals to 0. X is equal to 1 and x is equal to minus 5. So x की values क्या आई हमारे पास 1 and minus 5. So this is the answer. This is your answer. Is it clear? Now move to the next example. Example number 2. 2x square minus 7x plus 3 equals to 0. देखो हर क्वेश्चन में हमको होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करनी है. स्टेप सेम है. इसमें x का कोफिशिएंट क्या है 2. तो सबसे पहले हम पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे. तो फर्स्ट तो हमारे पास 1 आ जाएगा. जब 2 से 2 को डिवाइड करेंगे इट विल बी 1 माइनस 7/2x प्लस 3/2 इक्वल्स टू 0. अब उस फैक्टर के बारे में सोचते हैं जिसको हमको प्लस और माइनस करना है. 7/2 का हाफ करो. जो भी x का कोफिशिएंट है उसका हाफ यानी कि डिवाइड बाय 2 यानी कि ये कितना हो गया 7/4. अब 7/4 का स्क्वायर होल स्क्वायर. सो दिस इज 49/16. यानी कि हमें क्या करना है ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 49/16. तो एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 ये हमारे पास गिवन था. हमको ऐड करना है 49 व्हाट आई एम राइटिंग 49/16 minus 49/16. Add and subtract. Now first 3 terms will make a whole square. होल स्क्वायर किसका बनेगा जिसका स्क्वायर बेटा आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है हमेशा उसी का बनेगा. आपको इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की फॉर्म में लिखना है लिखिए. नहीं लिखना तो भी वो हमेशा एग्जैक्टली इट विल मेक अ होल स्क्वायर लाइक x and the second term will be 7/4. Sign will be you can check from the middle term. This is a square minus 2ab plus b square. So this is a formula of a square minus b square plus 2ab. So this will be a square plus b square minus 2ab. So this is a formula of a square minus 2ab plus b square. Clear? So this will give you a minus b whole square. This will give you a minus b whole square. So here it will be what is a x, what is b, b only 7/4 x minus 7/4 whole square. Is it clear? So let me rub it. Now this is whole square plus 3/2 minus 49/16 equals to 0. Let's take the LCM. 16 24 minus 49 equals to 0. So this is your x minus 7/4 whole square. This will be minus 25/16 equals to 0. X minus 7/4 whole square minus
25/4 का होल स्क्वायर, 25/16 क्या होगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर यहाँ पर इस पार्ट में कोई आपको होल स्क्वायर नहीं मिल रहा है तो आप रूट लगा के होल स्क्वायर बना लो उसका। Again we have to use the formula a square minus b square. We have to use the formula a square minus b square. What is this? A minus b into a plus b. By using this, what we get? We get x minus 7/4 minus 5/4, x minus 7/4 plus 5/4 equals to 0. X minus, this will be 12/4 and this will be x minus 2/4 equals to 0. This is 1, this is 2, this is 1, this is 3. So your x will be x minus 3 equals to 0 and x minus 1 equals to 0. X is equal to 3, x is equal to 1. x की वैल्यू आ गई 1 and 3. So this is actually the first question of the exercise 4.3. In every case you have to proceed like this. Now I am taking a different example in which you will get the answer no real roots. जिस केस में x की कोई भी रियल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, x का कोई भी रियल वैल्यूड आंसर एग्जिस्ट नहीं करेगा. नाउ वी विल कंसीडर वन सच एग्जाम्पल. दिस इज योर फोर्थ क्वेश्चन. 2x square plus x plus 4 equals to 0. Sorry, this should be 1/2 na? X minus 1/2, this is 1/2 and this is again 1/2. Clear? This is minus 1/2. Yes. Now move to 2x square plus x plus 4 equals to 0. First of all, we have to divide the whole equation by coefficient of x square. This is 2. So what we get? X square plus x by 2 plus 4/2 is 2 equals to 0. Now we have to consider the factor कि किस फैक्टर से हमको प्लस और माइनस करना है, किस वैल्यू से. दिस इज़ 1/2. कोफिशेंट ऑफ एक्स इज़ 1/2. इसका हाफ किया तो ये 1/4 आ गया. 1/4 का स्क्वायर किया तो ये 1/16 आ गया. तो 1/16 को हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 2 प्लस 2 प्लस 1/16 minus 1/16 equals to 0. First three terms will definitely give you whole square. और किसका whole square होगा? x plus 1/4 का whole square. Directly you can see from this rough work. Now the remaining is plus 16, 32 minus 1 equals to 0. x plus 1/4 का whole square plus 31/16 equals to 0. Now what is the difference in this example and in the previous examples? See, here we are getting minus. Here let me change the color so that it will become easy for you to check. See, here in previous example we were getting the form a square minus b square. And in the first question also we were getting the form like this, a square minus b square. X plus 2 is a square minus b square form at the end, after completing the square at the end. So but in this case, in our case we are getting a square plus something. So we cannot apply the formula. A square minus b square equals to a minus b, a plus b. We cannot apply this. So how we have to move further? We have to do x plus 1/4 का whole square is equal to minus 31/16. Is it possible कि किसी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव आ जाए? नो, दिस इज ए होल स्क्वायर ना, दिस इज ए होल स्क्वायर वैल्यू. सो वी कैन नॉट हैव अ स्क्वायर ऑफ रियल नंबर एज नेगेटिव. सो वी विल राइट हेयर नो रियल रूट एग्जिस्ट.
no real root exists. This much for today, and in the next video we will continue with the exercise 4.3 by quadratic method.